Hello everyone and welcome in Let's Connect with Prerna. My today's live session is Teachers Day special with Mrs. Anjali Jaipuria, and I'm inviting Anjali ma'am to join in my session. Wish everyone a very happy Teachers Day, and my today's live session I'm inviting Anjali ma'am to join in. Hello ma'am. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Happy Teachers Day, Anjali ma'am. Thank you so much, Prerna. Thank you so much. So, welcome everyone. My today's Teachers Day special session with Mrs. Anjali Jaipuria and Navshrijan NGO, and today we will be talking about a lot many things related to teachers, and also we would like to know more about Navshrijan. So, ma'am, should we start with our conversation? Yes, sure. Absolutely. मैम पैंडमिक के टाइम पे अगर हम बात करें टीचर्स के रोल की, तो आई वुड लाइक योर व्यूज एंड जयपुरिया स्कूल पे और जो टीचर का रोल रहा है, यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग ऑल दिस, अ लॉट ऑफ क्वेरीज, अ लॉट ऑफ जो पैंडमिक के टाइम की स्ट्रगल्स भी रहे हैं मैम टीचर्स के. आई वुड लाइक कि आज इस टीचर्स डे के everybody is joining us, so your views on the role of teachers during the pandemic. Okay, so I think there is some technical issue. Yes, I can hear you now. Yeah. Okay. So, Yeah. I'll start with a little story from the Ramayana. जो सबको पता है कि जब ब्रिज बना रहे थे श्रीलंका के लिए, तो हनुमान जी, सुग्रीव जी और पूरी वानर सेना बड़े बड़े बोल्डर्स डाल रही थी ओशन में, समुद्र में, इसलिए कि ब्रिज बनाना है. वहाँ एक छोटी सी गिलहरी भी थी और वो गिलहरी छोटे छोटे पेबल्स डाल रही थी. अब वानर सेना को चिंता हो गई कि कुचल जाएगी, तो उसको बोला कि भाई तुम थोड़ा मूव आउट ऑफ द वे, अदरवाइज यू विल गेट हर्ट. अब द स्क्विरल वाज अ लिटिल हर्ट, और श्री राम की नजरों से तो कुछ बचता नहीं है. उन्होंने देख लिया कि स्क्विरल हर्ट हो गई है और उन्होंने बुलाया सारी वानर सेना को. बोला, हनुमान, you can throw a boulder of 150 kgs and you're throwing that. And Sugriv can throw a boulder of 100 kgs and he's throwing just that. But this little squirrel, she can throw only a pebble of 10 grams. And she is making a huge effort of picking up a 25-gram pebble and throwing it into the ocean to create this bridge. Tell me, is the squirrel not worthy of respect and love, my respect and my love? Today in COVID times, our teachers are the squirrels of Ramayana. You know, they have given to our educational system much more than double of their capacity. Much more than double of their capacity. Look at the challenges they have met. They faced health challenges in their own homes, medical issues in their own homes, but they braved all this and they continued to teach. And their house help had gone. They continued to teach. They had to learn new skills. They had never made educational videos. They made so many educational videos. They learned how to teach online through Zoom, through Google Classroom. And now that the schools have opened and such few children are coming, they are learning how to teach synchronously. It is phenomenal. I salute our teachers. They are the real COVID warriors, you know. And how they've enhanced their profile, met all challenges, and what they have done. My salutations to our teachers. Yes. I think very बहुत मैम आपने टीचर्स का जो रोल रहा है, मतलब प्री पैंडमिक, ड्यूरिंग पैंडमिक, इनफैक्ट अभी भी जब दोबारा स्कूल खुल रहे हैं, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल और सुंदर स्टोरी से मैम आपने एक्सप्लेन. मैम आप कई बार बात करती हैं लिटरेसी और एजुकेशन, प्लीज इलैबोरेट हियर अबाउट इट. All right. See, teaching languages, social sciences, math, physical sciences, very important. It is very important. But
if we teach all these subjects alone I mean, that आप खाली पढ़ा रहे हैं, academic पढ़ाई करा रहे हैं, what are you doing? You are only making your children literate. साक्षरता दे रहे हैं आप बच्चों को, आप उनको सभ्य नहीं बना रहे, राइट? अगर आप देखते हैं पूरे वर्ल्ड ओवर में जो ये प्रॉब्लम है टेररिज्म का, जो ये हैवक हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, क्या ये लोग एजुकेटेड नहीं है? They are educated in the best of colleges who are joining all these negative movements. So they have also studied in the best of colleges. I'm asking you, Prerna, कि are these people who are creating so much havoc in the world, are they literate or are they educated? बताओ Prerna. बिल्कुल They मैम, are बिल्कुल। they are only, उन्हें साक्षरता मिली है. What component is missing in their education that they cannot be called educated? And that component that is missing in their education is spiritual component. They have missed the spiritual component, जिससे एक इंसान के अंदर love for the universe, universal love for humanity, concept of vasudhaiva kutumbakam, that the whole world is my family. एक ईश्वर है, एक सत्ता है जो बहुत बड़ी है, जिसके प्रेम के कारण हम इस आनंद में जी रहे हैं, उसके बारे में जानना, वो कहाँ है, ये सारा कुछ अध्यात्म ज्ञान में आता है, स्पिरिचुअल एजुकेशन में आता है. एंड फॉर फिलिंग इन दिस यॉर्निंग गैप इन एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म ज्ञान मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ वेरी यंग एज. Just to make it clear to you, Prerna, there जी is a मैम। big difference between religion and spirituality. I'm not talking about introducing religion. Religion is a matter of homes, घर में कराओ. But adhyatma crosses all boundaries of religion. And only when the component of adhyatma, या spirituality, is added to the school curriculum, then we will educate our students in the real sense of the term. That is the difference between literacy and education. मैम जस्ट अ मिनट, आई कैन सी अ लॉट ऑफ कमेंट जिसमें बोल रहे हैं कि ऑडिबल नहीं है. कैन एनीबडी प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आर वी ऑडिबल? आर वी ऑडिबल? कैन एनीबडी प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स कि क्या मैं और It's audible. They're saying it's audible. Please check your internet connection. That's ओके what आई they're saying. ओके ओके आई थिंक Okay. ऑडिबल. ऑल मैम, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से जो है लिटरेसी और एजुकेशन के बारे में जो एक डिफरेंस उसको एक्सप्लेन किया मैम. आई वुड लाइक टू नो हियर, प्लीज डिफाइन व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी. देखिए, सिंपल टर्म से समझाती हूँ मैं आपको. हर चीज का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है. अर्थ के अंदर भी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसके कारण हम सब अर्थ पे खड़े हैं, फिर भी हम टिके हुए हैं. जैसे पतंग है, उसकी एक डोर होती है. अब वो डोर जैसी छूट गई, तब फिर तो पतंग अस्त व्यस्त होके कहीं भी गिर जाएगी. तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो एक इंट्रिंसिक स्पेस है हर इंसान के अंदर. हमारे अंदर वो आत्मा, जो प्रभु का वास है, वो हमारे सेंटर में है, और वो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. जब वो एजुकेशन के थ्रू बचपन से हमारे को उसके बारे में बताया जाता है, तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ आके फिक्स हो जाती है. पर जब नहीं बताया जाता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाती है, जैसा कि भारतवर्ष में हो गया, क्योंकि वो अध्यात्म ज्ञान वापस डाला ही नहीं. आफ्टर वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस, इट कुड हैव कम बैक इनटू आवर एजुकेशन, जैसा कि प्री ब्रिटिशर्स था, पर वो डाला नहीं. तो अब हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया है? अब हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया है ग्रैब पावर एंड सीक प्लेजर. पावर और प्लेजर के पीछे, that has become the center of gravity of ours, and that is why we have lost what really is spirituality. Spirituality is a term which is used very loosely by us. Spirituality is actually an awakening. एक चैतन्यता का हमें अनुभव हो कि हमारे अंदर वो चैतन्य तत्व है. It is right there, which is other than my mind, which is other than my emotional being, which is other than my body. हमारे planes है, parts of being है. There is my physical body, there is an emotional body, there is a mental body, and there is the spiritual तत्व जो हमारे अंदर है. Spirituality is
to make a child aware of this presence of the divine within us, and then to make the child aware that you can be in connection with it, and then to give him tools how to get into connection with that. Then spirituality leads to a burning aspiration inside the child. जब उसको जागृत कर देंगे कि तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ है, ईश्वर तत्व है तुम्हारे अंदर, then spirituality will lead us to a burning aspiration to know more about the soul. Not only to know the soul, but to experience it, to feel it, to enter into a constant contact with it, and then to invite it into all that we are doing, right? And spirituality will lead to a turning, a conversion, a transformation of our outer nature. मेरी फिजिकल बॉडी हेल्दी हो जाएगी, मेरी इमोशनल बीइंग हेल्दी हो जाएगा, मेरा मेंटल बीइंग ट्रांसपेरेंट, क्लियर और साइलेंट हो जाएगा, अगर हम उस तत्व से ज्वाइन करके उसको इनवाइट करते हैं टू प्योरीफाई एंड परफेक्ट माय आउटर बीइंग्स. एंड दिस कैन बी डन व्हेन अ चाइल्ड इज मेड अवेयर ऑफ दिस हायर प्रेजेंस इन जूनियर क्लासेस. बचपन से उसको इसके बारे में बताते जाएंगे एंड बताएंगे कि इसको तुम इनवाइट कर सकते हो. आज मैं प्रेरणा के साथ बात करने वाली हूँ, हे कृष्ण, मेरे लिए वो कृष्ण है, आपके लिए अल्लाह होंगे, किसी के लिए क्राइस्ट होंगे, इट डजंट मैटर, बट उस लाइट को, उस ल्यूमिनोसिटी को मैं बुलाती हूँ कि आप मेरे थ्रू बात करिए, यूज मी एज योर इंस्ट्रूमेंट. क्या गया मेरा और कितना मिल गया? दिस इज स्पिरिचुअलिटी, एंड दैट इज व्हाई our school's logo is called St. M.R. Jaipuria School, School of Conscious Transformation, जहाँ बच्चे सचेत होकर के अपने फिजिकल बीइंग को, वाइटल बीइंग को, मेंटल बीइंग को ट्रांसफॉर्म करते हैं, एंड देन थ्रू स्पिरिचुअलिटी, राइट? मैम, अगर मैं सेठ एमआर जयपुरिया के विजन की बात करूं मैम, तो व्हाट इज द विजन बिहाइंड द एजुकेशन इम्पार्टेड इन सेठ एमआर जयपुरिया? See, every school has a philosophy, or let me put it this way, every school must have a philosophy, that philosophy which guides the educational pedagogy. As I said earlier, St. Yes. M.R. Jaipuria schools are schools of conscious transformation. Our students are made aware of every plane and part of their being, and thereafter they are made aware that every plane and part of your being, माने the physical, जैसे मैंने बोला, physical body, your emotional body, your mental body, all have to be transformed. And how do they have to be transformed? Transformed consciously. School of Conscious Transformation. तो सबसे पहले हम आते हैं कि what is the goal of life? हमारे स्कूल में बताया जाता है. What is the goal of life? Shri Krishna has said very clearly in the Bhagavad Gita to Arjun. He says, Mad bhavam agata. Become my natured, O Arjuna. Become my natured. If our goal of life is to transform consciously and become his natured, then we need to perfect every plane and part of our being. Let me start with the physical plane, right? ये हमारी एक physical body है, right? So in State MR Jaipuria School, our physical education program is it involves a rigorous fitness regime, which we have learned from Sri Aurobindo Ashram School, Pondicherry. Right? Every muscle, every bone, every ligament, every sinew of the body is consciously worked upon. Students are made aware कि तुमको हम sports करा रहे हैं तो क्यों करा रहे हैं? It is not to win. You are engaging in sports so that you develop a healthy body, a supple, agile physique, and you foster in yourself that spirit of endurance, teamwork, perseverance, all that. This is our vision for the physical education. Coming to the vision for the emotional, vital being, जो हमारा दूसरा प्लेन है हमारी बॉडी का, हमारे भीतर एक भाव जगत है. एक भाव जगत है जिसको हम वाइटल बीइंग कहते हैं, जहां से हम इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, है ना? इमोशंस ऑफ एंगर, लव, हेट्रेड, जेलसी, एम्बिशन, ये हमारा भाव जगत है. Now the children are made aware of their emotional being. And in our schools, the vital or emotional being of our children is refined
through Western music, through Indian music, instrumental, vocal music, dance, drama, poetry. We make sure कि हम जो डांसेस कराते हैं या जो गाने सिखाते हैं उनमें भी क्या जाता है, कैसे हम धीरे 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 उसके हृदय पटल पे एक सॉफ्टनेस, एक स्वीटनेस, लव, जॉय, इन सब को कैसे हम लोग धीरे धीरे थ्रू अ वेरी सिस्टमैटिक प्रोग्राम वी include it in their curriculum. Our philosophy is कि these skills of dance, drama, poetry, literature, they speak to parts of children's being which are otherwise left untouched. ये जमाना अब टीवी, वीडियो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो ये जो पार्ट्स हैं हमारे अंदर के ये अनटच रह जाते हैं. जैसे हमारे स्कूल में डांस मैंडेटरी है फॉर बॉयज एंड गर्ल्स अप टू क्लास 6. बॉयज ऑल्सो मस्ट लर्न डांस. लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई. These soft skills है ना, ये जो डांस ड्रामा ये सब, they engender in children a softness, एक कोमलता लाते हैं, मधुरता लाते हैं, soulfulness लाते हैं, आत्मीयता जिसको कहते हैं, compassion, करुणा, gentleness, सौम्य भाव लाते हैं. And this cannot be taught by saying ये मत करो, ये करो. You can't teach it. You have to grow it because वो अंदर है. आत्मा में ऑलरेडी ये वैल्यूज हैं. उस आत्मा को अगर हमें अनवेल करना है तो हमें इस सुंदर सुंदर चीजों से के थ्रू वो अनवेल हो जाएगी आत्मा की सुंदरता. अब ये हुआ वाइटली. अब हम आपको बताते हैं वैल्यूज. द होल वर्ल्ड, आई मेट सो मेनी educationists in Finland, which is supposed to be the tops. They are also, everybody is trying to find some system by which I can do value education. How to instill values in children. But why are we trying to reinvent the wheel? Why? Our forefathers have already done it. अगर आप ह्यून सैंग and other travelers की बात पढ़ें, उन्होंने बोला before the Britishers came in, before the invasions came in, कि इंडिया में honesty, virtues, sweetness, rightness, ये सब तो ऑलरेडी हमारे अंदर था. ये सब चला गया. क्यों चला गया? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम को चिप कर दिया गया, कट कर दिया गया. Now all the values that we want to learn are already woven in the warp and weft of our Sanskrit language. Our Vedas, our Upanishads, our Bhagavad Gita, they abound with mantras, shlokas, verses, which when chanted again and again and again and again, the character. And in Jaipuria school, we have created a Sanskrit curriculum, which is our curriculum called Deva Bhasha. And in this, all these mantras have been incorporated in the last chapter. The whole book is being designed in a specific manner, and it is taught. Sanskrit is taught in our schools from play group. So बच्चों को संस्कृत लैंग्वेज से प्रेम हो जाता है, भगवत गीता से प्रेम हो जाता है. And yeah, that's what I say. Now when it comes to the mental being, हमने physical बोला, emotional बोला, अब mental being की बात करते हैं. When it comes to empowering the mental being, we believe in a research driven teaching methodology. Research driven. हमारे मिडिल स्कूल के जो बच्चे हैं उनको ग्रुप्स में डाल दिया जाता है, 6, 7, 8 के बच्चों को. जो भी सब्जेक्ट टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं वो उनको पहले बोला जाता है कि तुम इस पे खुद रिसर्च करो. There are research rooms in our school, and the children are doing their own research. The first class of that subject will be driven by the children. It's a flipped class. The children will take the class and they will put forward their research. And so what happens through this research-driven pedagogy, it encourages our students to do research and enhance their team building skill. Mental being को अगर हमें transform करना है, तो there has to be a lot of mindfulness in our children. They must learn to concentrate, introspect. They must learn to silence their mind. हर period हमारा, 8 periods in a day, every period begins with a 2-minute silence. माने 8 बार दिन में 2 मिनट के लिए the child learns to silence his physical body.
धीरे धीरे he starts becoming aware of his emotional turmoil अंदर. That becomes silent because you're doing practice again and again. So that. And then when you come to spiritual education, physical, vital, mental, spiritual education, let me tell you what lies ahead of you, what lies behind you, what lies above you, what lies below you are tiny matters as compared to what lies inside you. This belief is the driving force of the educational pedagogy of Jaipuria School. Our lesson plans are also made in such a manner that our students are made aware of धीरे धीरे हर lesson plan के through they are made to experience this luminosity within, this soul, this Atma within. Our philosophy is to make the students conscious of this presence, right? So we have actually in our school, we are also having daily Bhagavad Gita classes, बिल्कुल optional, after school. और ये बच्चे आज आप किसी का भी इंटरव्यू लेके देखिए बिना कोई तैयारी के वो भगवत गीता का कोई भी वर्स कोई भी टॉपिक के ऊपर spontaneous they will be able to speak, right? And these children of senior school since the last 2 months or 3 months are holding classes 3 times a week for us junior and middle school on Zoom. Every 3 times a week ये बड़े बच्चे छोटे बच्चों को और स्पिरिचुअलिटी गीता वैल्यूज के ऊपर बोल रहे हैं. और लास्ट बात मैं आपको बताती हूँ कि एवरी समर सिंस लास्ट 4 summers वी बीन होल्डिंग अ स्पिरिचुअल रिट्रीट. 2 साल से पैंडेमिक था तो जूम पे हो रहा है इन विच वी कॉल स्पीकर्स फ्रॉम ग्रेट इंस्टीट्यूशंस लाइक श्री अरविंदो आश्रम एंड मेनी अदर्स. एंड इस स्पिरिचुअल रिट्रीट में जो होता है वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है. It is only a matter of experience. You can only experience it. I will send you the links of the last spiritual retreat 9 दिन की किए थे. So Seth Hemar Jaipuria's vision, आपको शॉर्ट में बोलती हूँ, is to create in the words of Sri Aurobindo sun-eyed children of a marvelous dawn. हम कल में नहीं बिलीव करते हैं. जो कल आने वाला है उस डॉन के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं who are hero warriors who will become a force that will rebuild our nation. This is it. Ma'am, please share with us your vision behind Nafs region, जो Nafs स्कूल region, हाँ. अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए. तो मैं चाहूंगी आपका विजन बिहाइंड नफ्स रीजन. When it comes to underserved children, Prerna, we need to think in terms of equity, not equality. अगर हमने अपने लेवल प्लेइंग ग्राउंड किया तो उससे बच्चों को भला नहीं होगा because they are really underserved. They need to be given equity. They need to be given more and more. So we started Navsrijan in 2010 and we started it from playgroup. And now today we have 350 students on roll. These students, Navsrijan students, have a wing of themselves. Jaipuria school का एक wing हमने नवसृजन के लिए दे दिया है. पर अब बच्चे इतने हो गए हैं कि वो प्ले ग्रुप के जाते के साथ वो पूरे हमारे 10-8 क्लासरूम्स ले लेते हैं. लोअर केजी जाते के साथ वो क्लासरूम भी ऑक्यूपाई करते हैं. अभी हम 4 क्लासरूम्स और उनके लिए बनवा रहे हैं. तो these children are imparted the same education as Jaipuria school. Same education. इन्हीं हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं. They are being given English medium education, sports, music, instrumental and vocal, dance, many genres of dance, poetry, theater, and spirituality is woven again into their lesson plans like it is done for a normal school. Let me give you an example. Maybe उस example से आप सब समझ जाएंगे. There is a girl called Nandini and there are others like her. I'm giving one girl's example. In the morning, she goes to work at her boss's place, washing clothes, cooking, cleaning, all that. The same girl goes to the same boss in the evening, where उनकी मालकिन के friends आते हैं. And वो सारे around the circle बैठते हैं and नंदिनी उनको गीता पढ़ा रही है 6 महीने से.
ये मेरी अंडर सर्व लड़की है, नवसृजन की लड़की है, वर्स बाय वर्स उनको गीता पढ़ा रही है, 6 महीने हो गए। और ऐसे नवसृजन के कितने बच्चे हैं। नवसृजन में Navsrijan takes part in all school competitions, inter-school competitions of Lucknow, where all the good schools of Lucknow take part. जयपुरिया स्कूल के 32 schools take part. And अभी last month हुआ था Crescendo करके competition. You can go to our website and check. In this year's Crescendo, our Navsrijan students, जिसमें 32 जयपुरिया schools थे, including Gomti Nagar, our Navsrijan students won first prize. I'm only telling about the first prize. बहुत second prize, बहुत third prize, बहुत runners up. Navsrijan students won first prize in English elocution, first prize in Hindi on the spot story writing, first prize in English on the spot story writing, first prize in Hindi storytelling, first prize in mono act. The list is very long. कितनी बताऊं? तो मैंने सोचा इन एग्जाम्पल से आप समझ सकेंगे कि कैसा एजुकेशन इन बच्चों को मिल रहा है. All I can say is I'm deeply, deeply grateful to God. So grateful to God कि अगर ये इम्पल्शन आया कि नवसृजन खोलो तो वहीं से तो आया. 2010 में तो आरटी था ही नहीं, तो हम लोगों ने खोला बिकॉज हम लोगों का इच्छा थी खोलने की, अंदर से एक इम्पल्शन था कि तो करना ही है. पर हमको नहीं मालूम था तब कि इस लेवल पे नवसृजन पहुंच जाएगा, इस लेवल पे हमारे बच्चे पहुंच जाएंगे. हमारा एक बच्चा यहाँ पे सेंट स्टीफन्स आता था, अभी तो पैंडेमिक चल रहा है, फ्रिस्बी सिखाने सेंट स्टीफन्स कॉलेज आता है. एक बच्चा इतना बढ़िया है क्रिकेट में कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको. तो ये सब कोई प्रभु कृपा के बिना ये सब होता नहीं है. There has been a huge amount of Prabhu Kripa, and I'm deeply grateful to God that He has given us this opportunity. He's given us this aspiration to begin Navsrijan. I'm so grateful to Mrs. Asha Chatta, the principal of Navsrijan, who's also a junior school, uh, yes, academic head, and our unbelievable set of teachers whose dedication to this cause of Navsrijan can only and only be matched with their sincerity. I think I've spoken a lot, and I hope I've been able to. Ma'am, from the vision behind Navsrijan to your message for teachers to जो आपने एक इतनी beautifully जो different बताया literacy और education का, I think whosoever is watching us right now, later when they'll watch, तो जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कहीं ना कहीं बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें नवसृजन के बारे में पता भी है, बट विजन क्या है, क्यों नवसृजन जो है वो एग्जीक्यूशन है, और क्या ऐसा लर्निंग है सेठ एमआर जयपुरिया के पीछे. आई थिंक टुडे दे ऑल विल गेट क्लैरिटी. Thank you. So much actually, ma'am, for sparing time and coming live with me, and we talked about so many things today. So before I conclude, अंजलि मैम, आपका मैसेज सभी के लिए जो हमें देख रहे हैं और बाद में जो ये टॉक शो देखेंगे. मेरा मैसेज उन सब के लिए जो हम लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बस एक ही मैसेज है कि जो इस ईश्वर ने हमको बनाया है, और बल्कि उस ईश्वर ने हमें बनाया नहीं है, जो ईश्वर प्रेरणा बना, अंजलि बना, नवसृजन के बच्चे बना, ये पेड़ पौधे बना, ये चिड़िया बना, ये फिजिकल बीइंग बना, जो कुछ जो जो ये बना है, वो हमारे थ्रू हमको अपना इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहता है. हम उसकी बांसुरी बन जाएं, हम उसकी वो पत्ता बन जाएं जिसको वो ब्रेथ, उसकी ब्रेथ से हम उड़ें. वो जो चाहे वो हमारे शब्द निकलें, वो जो चाहे वो हमारे इमोशंस में फील होए, वो जो चाहे हमारे माइंड्स में आइडियाज आए, वो हमको अपनी बांसुरी बना ले. यही हम सबका एस्पिरेशन होना चाहिए कि हम उसकी बांसुरी बन जाएं. बस ये हमारा आप सबको मैसेज है कि ट्राई टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन, अ प्योर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन. थैंक Thank you so much, Anjali, यू. थैंक यू. and once again a very happy Teachers Day to you. Thank you so much. My salutations to all the teachers of the world. You have done remarkably, and you have
I mean, you've become an icon, an example for the world ki what dedication and sincerity can do. Yes. Thank you so much, ma'am. Thank you everyone who watched us, and everyone once again a very happy Teachers Day. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Prerna. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you, viewers. Bye.